Hello my dear students, here I am Dhruva Patel, your biology teacher at Aaradhya class CTM. Now beta, today we will continue about our chapter number 2, that is about the biological classification, and over here we are studying about the kingdom Protista, and as you know the second phylum of the kingdom Protista is the Myxomycota. So today we will study about the Myxomycota. Now beta, this Myxomycota is commonly known as the slime mold also, okay. जनरली हम उसको स्लाइम मोल्ड भी बोल सकते हैं. Now बेटा, this Myxomycota phylum containing the combined characteristic of the both, means they have some characteristic of the plants also and some characteristic like the animals also. So beta, over here we will discuss these Myxomycota contain which characteristic of the plants and which characteristic of the animal, okay. So these contain or these have characters like both plant as well as animal, plants as well as animal. So beta, first we will deal with the characteristic like the plants and then we will see characteristic like animals, okay. So like plant, they can form the spore for the process of the reproduction. बेटा जैसे आपको पता है कि प्लांट्स के केस में जनरली रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं और उसके साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन भी होता है. दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, वैसा एनिमल में नहीं होता है. सो ये Myxomycota जो है उसमें एक कैरेक्टर है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर फॉर द रिप्रोडक्शन. स्पोर प्रोडक्शन कैरेक्टर is like plant, and another one is the cell wall that also contain the cell wall like the plant, okay. Now बेटा like animal उसमें कौन से कैरेक्टर होते हैं? So first that is the somatic body organization, means reproductive cell के अलावा बाकी सारे cells जो होते हैं बेटा बॉडी में उसको हम somatic cell बोलते हैं. तो बॉडी का somatic organization जो होता है that is like the animal, okay. So somatic body organization is a character like animal, okay. And second one is the mode of the nutrition. Mode of nutrition is also like animal. Mode of nutrition. Now beta, these slime molds are of two types, acellular slime mold and cellular slime mold. Slime molds are of two types, fine, that is the acellular slime molds and second one is the cellular slime molds. Fine enough beta. So this phylum is divided into the two types. So now we'll see the difference between these two, acellular slime mold and cellular slime mold. Now beta, we'll see the difference between the two types of the slime mold, that is nothing but the acellular slime mold and another one is the cellular slime mold, okay. In a acellular slime mold, the vegetative phase of the body or life is a diploid. It means beta it containing the chromosomes in a pair, that is known as the 2n number of chromosome, okay.
and they are the multinucleate plasmodium. While in cellular slime mold जो form होता है उसमें the vegetative phase is a haploid, means they contain the chromosomes single, not in a pair, and that can be denoted by the N. Fine. That is known as the pseudoplasmodium with the amoeba-like cell, means with the uneven or irregular shaped cells. देन बेटा यहाँ पे ऑलरेडी ये सेल डिप्लॉयड है, तो इसीलिए उसमें से स्पोर फॉर्म होने के लिए मियोसिस की प्रोसेस होती है ताकि हैप्लॉइड स्पोर्स बन पाए. फाइन. ओवर हियर जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं दे आर बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, बिकॉज एज यू नो कि यहाँ पे सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो उसमें से तो कुछ हाफ नहीं हो सकता है, सो मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, एंड एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. फाइन. while over here the process is meiosis. Done. Then third one, यहाँ पे जो zygote बनेगा that germinates involving only mitotic division and forms the plasmodium. While over here the zygote germinates involving, उसमें बेटा बीच बीच में meiosis भी होता है and that forms the pseudoplasmodium. बेटा कहीं पे भी बायोलॉजी में pseudoplasmodium वर्ड आता है ना, that means the pseudo वर्ड आता है, that is the false. जैसे कि हम एमोइबा में भी बोलते हैं ना false fit, वैसे शूडो वर्ड जो होता है ना बेटा दैट इज द फॉल्स. सो यहाँ पे प्रॉपर प्लाज्मोडियम और राइट और ट्रू प्लाज्मोडियम नहीं बनता है. ओके. नाउ द एग्जांपल ऑफ द ए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स आर नथिंग बट दैट इज द स्टेमोनाइट्स एंड फाइसेरम, while the example of the cellular slime mold is the dictyostelium. Fine. So beta this is whole about the slime mold. Now beta we'll move on another phylum of the Protista, that is the Dinoflagellates. Means beta name itself indicate this phylum having the two flagella. Fine. Beta these organisms are generally unicellular organisms having the cellulosic cell wall. Okay. Unicellular organisms having cellulosic cell wall. Cellulosic cell wall. Fine. Now beta their body is completely divided into the two parts because of the plate. Fine. And two flagella are present in their body as the name itself indicate. Fine. So we can write they contain two flagella, and beta their body is divided into the two parts because of the plate, and that gives the arm mold appearance that I am going to draw over here. Okay. Their body is divided into two parts because of plate. Fine. And which gives the arm mold appearance, which gives arm mold appearance. Okay. Now but I am going to draw the diagram for same how their body is completely divided into the two part. Fine. So beta for that, just for an example, this is a central plate present. Okay. Likewise, and because of this plate their body is completely divided into the two part, and beta this is the furrow between two plate. देखो, this is the furrow between two plate. Fine. And two flagella are present
one flagella is like this and another flagella is like this. So this is two flagella, one is the longitudinal and another one is the transverse, fine, and that's why that is known as the dinoflagellates. See, this is flagella and this is also a flagella, fine, and because of the plate the furrow is formed over here and we can draw like this, which gives the arm mold appearance, or the part is completely divided into the two part. This we can see clearly over here, fine enough. So this is nothing but about the dinoflagellates whose body is completely divided into the two part because of the plate and furrow formed from the plate, and one is the longitudinal flagella and one is the transverse flagella, fine. Now we will see examples of the dinoflagellates. So that is nothing but Glenodinium, Noctiluca and next one is the Ceratamium. Now बेटा उसका एक और जो टाइप का डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है that is the Gonilux that cause the red tide in the oceans, as बेटा they are red of color because of the pigments. एंड वन मोर थिंग बेटा, उसका डबलिंग टाइम जो होता है वो इतना फास्ट होता है कि कहीं पे भी वाटर बॉडी में वो प्रेजेंट होता है तो बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करके वो इतने जल्दी ग्रो हो जाते हैं कि पूरे ओशंस में वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड वहाँ पे हमें वाटर देखने को ही नहीं मिलता है, उसके ऊपर पूरा ये स्प्रेड हो जाने की वजह से हमें पूरा रेडिश कलर देखने को मिलता है. सो दैट इज नोन एज द रेड टाइड caused by the dinoflagellate. Fine enough beta. So we can write they cause red tide in ocean, red tide in ocean. एंड वन मोर थिंग बेटा, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है दैट इज द वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेशली फॉर द फिशेस. फाइन, दे रिलीज toxic substance which is very harmful, for fish. Fine. Now beta, in these the sexual reproduction is almost unknown for all dinoflagellates, means उसमें sexual reproduction होता ही नहीं है, simply asexual reproduction होता है. Okay, sexual reproduction is almost unknown. Done. Then beta, over here two flagellas are present. One is in a longitudinal section while another one is in a transverse section in between the two plates or in a furrow developed by the plates. Fine. They contain two flagella. One is in longitudinal direction while other is in transverse direction in a furrow developed by the plates. Fine beta, so this is nothing but a whole about the dinoflagellates.
Now beta the another phylum of the Protista is nothing but that is the Chrysophyta. Previously they are known as the diatoms और desmids. पहले बेटा उसको डायटोम्स और डेस्मिड से पहचानते थे, बट अभी इस फाइलम को हम क्राइजोफाइटा बोलेंगे. ओके, प्रीवियसली दे आर known as a diatoms or desmids. फाइन. अगर बेटा हम उसके हैबिटेट की बात करें, सो दे आर प्रेजेंट इन अ बोथ मराइन वाटर एज वेल एज इन अ नॉर्मल वाटर. क्लियर? दे आर present in a both marine as well as normal water bodies. Now beta they are the major phytoplanktons of the water bodies. I hope you cannot understand the word phytoplankton. I am going to explain this word phytoplankton. Okay, they are major phytoplankton in water bodies. Now the phytoplankton word is nothing but that is known as the plants of the aquatic life or that is known as the producers in aquatic life. जैसे आपको पता है बेटा यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ में जो भी अपना फूड अपने आप से प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर्स को हम प्लांट बोलते हैं, एंड जो कंज्यूमर्स है कि जो प्रोड्यूसर्स के पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए उसको हम एनिमल्स बोलते हैं. सो बेटा एक्वेटिक लाइफ में यानी कि वाटर बॉडीज में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, एंड जो एनिमल्स है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए कि जो कंज्यूमर्स है किसी और के पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं उसको हम यहाँ पे जूओप्लैंक्टन्स बोलेंगे. फाइन. सो कभी भी बेटा ये दोनों वर्ड आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फाइटोप्लैंक्टन यानी कि प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स ऑफ द वाटर बॉडीज, एंड जूओप्लैंक्टन्स यानी कि एनिमल्स और कंज्यूमर्स ऑफ द वाटर बॉडीज. फाइन इनफ. सो बेटा ये जो क्राइजोफाइटा है दे आर द मेन फाइटोप्लैंक्टन्स और प्रोड्यूसर्स इन अ वाटर बॉडी. ओके, प्रोड्यूसर्स in water bodies. Okay, now beta these organisms can float on the water because of this their reserved lipid content. And as you know very well beta, the lipid is nothing but that is one type of oil also. Oil को भी हम एक टाइप का lipid बोलेंगे, है ना. And as you know very well that is the light in a weight which gives it buoyancy and they can float on the water. Okay, they can float on water because of reserved lipid कंटेंट. उसके अंदर बेटा लिपिड कंटेंट रिजर्व्ड होता है, उसकी वजह से वो फ्लोट कर सकता है. फाइन इनफ बेटा. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राइसोफाइटा. सो नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ क्राइसोफाइटा. Now on the basis of the body organization, these diatoms are of two types.
bilaterally symmetrical and radially symmetrical. So for that you must know the meaning of the bilaterally symmetrical organisms and radially symmetrical organisms. So bilaterally symmetrical organism का मीनिंग ये होता है बेटा कि कोई भी एनिमल की बॉडी को अगर हम मिडल में से कट करेंगे या तो मिडल प्लेन से कट करेंगे एंड अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, then that is known as the bilaterally symmetrical. And some of the diatoms are the bilaterally symmetrical, means which we can cut their body into the two equal half, and they are known as the pinnate diatoms. Okay, while some are with the radially symmetrical. रेडियल सिमेट्रिकल का मीनिंग ये होता है बेटा कि उसको हम कोई भी पार्ट से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दे आर नोन एज द सेंट्रिक डायटोम्स. सो सम आर दी पेनेट डायटोम्स एंड सम आर दी सेंट्रिक डायटोम्स विथ bilateral symmetry or radial symmetry. Fine. So now beta I am going to draw the diagram for both. Fine. देखो just for an example, पेनेट सिमेट्री यानी कि ऐसी होती है, देखो बेटा अगर हम ये मिडल प्लेन से कट करेंगे तो बॉडी को टू इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज द पिनेट डायटोम्स. समटाइम्स बेटा ये जो डायटोम्स होता है ना उसकी बॉडी जो होती है दैट इज लाइक द सॉफ्ट बॉक्स, कि जैसे कैसे कि सॉफ्ट बॉक्स में नीचे का जो होता है उसको हम कवर से बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसका नीचे का जो लेयर होता है दैट इज द हाइपोथेका और उसको ऊपर एक कवर से बंद कर सकते हैं दैट इज द एपिथेका. दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर. द बॉडी इज लाइक द सॉफ्ट बॉक्स. सी fine beta, this layer is known as the hypotheca and this is known as the epitheca. Clear? Now beta we will see the radially symmetrical body that is known as the centric diatoms. See that is like fine. We can cut them into the equal parts from any of the plane. देखो कहीं से भी कट करेंगे ना बेटा तो टू इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द सेंट्रिक डायटोम्स. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेंट्रिक डायटोम्स which contain the radial symmetry. Fine. So this is nothing beta but about the body organization of the diatoms or Chrysophyta. Okay, so this is whole about the body organization. Now we'll beta move on the next topic, that is the general characterization of these diatoms. Now we'll move on the next topic, that is the body design. Fine enough. From the cell wall point of view. So beta their cell wall is mainly made up of the silica and that forms the फाइन कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन. वो सिलिका भी बेटा ऐसे अरेंज्ड होती है कि उसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी सी पैटर्न और डिज़ाइन फॉर्म होती है. ओके, देयर सेल वॉल is made up of silica which forms fine characteristic design. Okay, fine characteristic design. Okay beta, now next one is that cell wall is formed like or their cell wall is arranged like the soft case, and their lower part is known as the hypotheca and their cover is known as the epitheca, जैसे बेटा मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया था. ओके, their cell wall formed
soapcase-like structure, soapcase-like structure in which lower part is known as the hypotheca and upper cover is known as the apitheca. Now beta, their cell wall is made up of the silica and which is the non destructible, वो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, यानी कि डिग्रेड नहीं होती है. आफ्टर सम टाइम दे शेड ऑफ देयर सेल वॉल, वो अपने सेल वॉल को शेड ऑफ कर लेते हैं. मीन्स वो जहाँ पे भी रहते हैं ना बेटा, वहाँ से हमें पूरा सिलिकॉन देखने को मिलता है, या तो हम वहाँ से सिलिकॉन ले सकते हैं. सो वहाँ पे सिलिकॉन डिपोजिशन की वजह से वो पूरा जो एरिया बनता है उसको हम समटाइम्स डायटोमेशियस अर्थ भी बोलते हैं. फाइन. एंड दैट जनरली फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियंस. ओशियन के फ्लोर पे बेटा वो अपने सारे जितने भी डायटॉम्स हैं वो अपने सेल वॉल को ऐसे शेड ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे पूरा सिलिकॉन स्टोर हो जाता है. क्लियर इनफ. एंड वो सिलिकॉन स्टोरेज जो हुआ है वहाँ पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द डायटोम्स, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द डायटोमेशियस अर्थ. ओके. देयर सेल वॉल इज नॉन डिस्ट्रक्टेबल and they form diatomaceous earth on the floor of ocean. Fine enough beta. So this is nothing but about their cell wall. Now the next topic is about the reproduction of the Chrysophyta. Now beta, they reproduce by both the mode sexual reproduction as well as by the asexual reproduction. So first we'll see about the sexual reproduction. So beta, for the sexual reproduction they forms the gametes with the help of the meiosis process, and then with the fusion of the gametes they forms the diploid exospores. फाइन. सो सबसे पहले बेटा हम पूरी साइकिल देखेंगे उसके लाइफ की. तो ये डायटोमियस सेल जो होता है दैट इज द 2n, तो उसमें बेटा सेल डिवीजन से नंबर बढ़ते ही रहता है. देन उसके बॉडी में एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन, स्पेशली फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस की प्रोसेस से जो गैमेट्स बनेंगे दैट कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज प्रेजेंट इन अ डायटोमेशियस सेल. फाइन. देन वन मोर थिंग बेटा, ये सपोज कोई एक गैमेट है, हम उसको आइदर एज अ मेल और एज अ फीमेल गैमेट एज्यूम करेंगे, और कोई ऐसा दूसरा भी गैमेट होगा कोई दूसरे पेरेंट में से. फाइन. सो वो दोनों गैमेट के बीच में फिर फ्यूजन होगा. सो एज अ रिजल्ट जो ऑक्सोस्पोर बनेगा दैट विल बी अ 2n. फाइन. बिकॉज देखो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये मैंने एक पेरेंट की साइकिल आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है. ऐसे दूसरे पेरेंट में भी रन होगी, बट हम उसका सिर्फ यहाँ से गैमेट देख रहे हैं, और दोनों के गैमेट के बीच में फ्यूजन होके 2n ऑक्सोस्पोर जो बनता है दैट विल डेवलप एज अ डायटोमेशियस सेल एज अ 2n बॉडी. फाइन. Now beta one more thing कि only this stage of the life is known as the haploid phase, कि जहाँ पे meiosis से gamete बना है. At that time the chromosome numbers are half. That's why that is known as the haploid phase. While this phase of life is known as the diploid phase, means that is the generation of the diatomaceous cell from these oxospore.
So beta, this is nothing but whole about the sexual reproduction, and they generally reproduce asexually by the fission only. Means beta सिर्फ fission method से ही वो asexual reproduction करते हैं. So we don't need to study in detail about asexual reproduction. Okay, asexual reproduction occurs by fission only. Fine beta, so this is nothing but a whole about the Chrysophyta. Now beta, last topic of this phylum is nothing but economic importance. But economically they are very important for the 2 point of view. First is as they are the major phytoplanktons or producers in aquatic body, and next one is because of the silicon deposition they have the great economic value. Fine. So first we will deal about the phytoplankton point of view. So beta, this diatoms forms the major phytoplanktons of the oceans and account for the 80% of the biomass in the oceans. ओशन में बेटा 80% बायोमास प्रोडक्शन जो होता है दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्राइसोफाइटा. देन बेटा हम उसमें से जो डायटोमेशियस अर्थ बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन, वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है. सो दैट इज फॉर फर्स्ट एज अ एब्जॉर्बेंट फॉर द लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक द एक्सप्लोजिव बनाने के लिए. सेकंड इज फॉर फिल्टरिंग द लिक्विड्स इन अ शुगर फैक्टरीज. Third one is as an inert extender in a paints. Then beta is the insulators in a boilers and blast furans. And last one is in a powder form as a abrasive in a silver polish and in a toothpaste also. Fine beta. So this is nothing but whole about the Chrysophyta. In our next lecture we'll deal with the last phylum of this kingdom, Protista.